Hello, good evening, everyone. So today we will continue with microeconomics revision. एम ये है कि छोटा छोटा करके हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को CUET के लिए अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर कवर करें. So कल हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था. We tried to understand what is marginal utility analysis. हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा, हमने उसके रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पढ़ा और एंड में हमने उसके लिमिटेशंस पढ़े. इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप सारे के सारे इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखें. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द इकोनॉमिस्ट. तो चाहे मैंने कल मार्शल का नाम लिया हो या जेविन्स का नाम लिया हो, आपको वो सारे इकोनॉमिस्ट के नाम याद होने जरूरी है. आज हम स्टार्ट करेंगे विद द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहले हमें ये लॉ समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं. जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, देखो इस लॉ को बोला जाता है गोसेन्स सेकंड लॉ. कल हमने जो बात की थी वो की थी गोसेन्स फर्स्ट लॉ की. व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे वाज कॉल्ड गोसेन्स फर्स्ट लॉ, right, which was the diminishing marginal utility law. Today what we are studying is called Gossain's second law. So the Gossain's second law, basically this law is where exactly the consumer equilibrium is explained. So it says that we have to achieve equi marginal utility from each product. Matlab marginal utility of X divided by price of X should be equal to marginal utility of Y divided by price of Y. इस इक्वेशन को गोसेन्स सेकंड लॉ बोलते हैं. तो गोसेन्स सेकंड लॉ इज वेरी सिंपल. इट सेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. जस्ट ट्राई एंड थिंक ऑफ रीराइटिंग दिस थिंग. कैन आई रीराइट दिस लाइक दिस? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. आई कैन. अच्छा बेटा, ये क्या होता है? ध्यान से सोच के बताओ, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज नथिंग बट px बाय py. दिस इज नथिंग बट marginal rate of substitution and this is nothing but px by py. So if you really think about this, what is this saying? This is saying a very simple thing. This is saying that the slope of IC should be equal to the slope of budget line. ये हम सब ने पढ़ा है. We have done this concept. But आज का जो हमारा पॉइंट है इस पूरे में, वो ये याद करना है कि इसी को ही गोसेन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं. The name of economists are important from the point of CUET. इसी को ही law of equi marginal utility भी बोलते हैं. The name is important. सिर्फ और सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो टू टेक एन एग्जांपल, सपोज आई टेल यू दैट दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स which are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is marginal utility from X. This is 20, 18, 16. It has to diminish. वही तो first law था. 14, 12 and 10. This is marginal utility from Y. ये हो गई 24, 21, 18, 15, 9 and 3. ठीक. अब supposedly आपको given है that price of good X is 2 and price of good Y is 3. बेटा ध्यान से बताओ, what will be mu X by px? It is going to be 10, 9, 8, 7, 6, 5. mu y by py क्या हो जाएगा? 8, 7, 6, 5, 3 and 1. ये हो जाएगा mu x by px and mu y by py. अब अगर आप एक बारी सोचो, mu x by px and mu y by py, these are not equal. These are not equal. This is more, अगर आप हर जगह पे देखो, than this. mu x by px is more than mu y by py. तो बहुत ध्यान से समझो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है.
they will give you something like this. And they will ask you, what should consumer do for equilibrium? Equilibrium में आने के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है एग्जाम में कि देखो MUX/PX, this is greater than MUY/PY. What should the consumer do? कैसे हम equilibrium में आ सकते हैं? Now we know something very important. We know that equilibrium says MUX/PX should be equal to MUY/PY. मतलब इस वाली चीज को गिरना चाहिए या इस वाली चीज को उठना चाहिए. Either this should decrease or this should increase. If any of these happen, if MUX/PX decreases or MUY/PY increases, we can attain equilibrium. मानते हो सब? अभी ये इससे बड़ा है, जैसे ये 5 है, ये 4 है, तो अगर ये 4.5 पे गिर जाए और ये 4.5 पे उठ जाए तो इक्विलिब्रियम आ गया ना, दोनों इक्वल हो गए. So I need to decrease MUX/PX and I need to increase MUY/PY. बेटा PX and PY कांस्टेंट्स हैं, ये प्राइजेस हैं. तो अगर मुझे इसको डिक्रीज करना है तो मुझे ये न्यूमरेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो मुझे न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा. So I will have to decrease MUX and increase MUY. Law of diminishing marginal utility क्या बोलते हैं? That you increase the consumption of the good, marginal utility decreases. तो अगर मुझे MUX को decrease करना है, if I want to decrease MUX, I must increase X. And I want to increase MUY, I want to go ahead and decrease Y. So इस केस में बहुत 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बट इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा टू इंक्रीज X एंड डिक्रीज Y. दिस विल बी योर आंसर. प्लीज कीप दिस इन माइंड. कैसे हमने किया है, this is going to be your answer. If there is any question, posted in the chat window, but this is going to be your answer. I will have to increase X and decrease Y. Every additional unit of X I consume, it gives me more utility than what I consume of Y. So I must increase X and decrease Y. इसी को देखने का एक और तरीका भी है. देखो MUX/PX greater than MUY/PY दिया हुआ है, ध्यान से समझना. इसको अगर मैं रीराइट करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ MUX/MUY greater than PX/PY. ठीक है, ये MRS हो गया. बेटा जब X और Y सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और ये कंडीशन आती है तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ गुड X को कंज्यूम करते हो. मतलब X चीपर गुड है इसलिए आप X को कंज्यूम करते हो. जब भी ये कंडीशन आती है in substitute goods, we will revise this again, but whenever you see this condition in substitute goods, you consume only good X. This is what you do, है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी तो बेटा यही बोल रहे हैं कि X को बढ़ाओ और Y को कम करो. This is my answer. 4 options will be given and you have to mark the correct one, but something like this can come in exam. Okay. Now let us talk about demand. ठीक है जी. तो डिमांड जो होती है वो 3 types of demand exist करती है जो एग्जाम में भी आ सकती है. There are 3 types of demand that you must go ahead and understand, right? And in this, the first kind of demand that we have, this is called the price demand. The second type of demand that we have is called the income demand. And the third type of demand that we have is called the cross demand. So there are 3 types of demands that we have,
And these three type of demand actually are again a part of Marshallian analysis. तो ये पूरा का पूरा मार्शेलियन एनालिसिस का ही पार्ट है, जिसमें हम ये तीन तरीके के डिमांड्स को पढ़ते हैं, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। देखो ये सब बहुत बेसिक है, ये आज तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता था। दिस वाज नेवर बीइंग आस्क्ड इन ISI, DSC, JNU, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट CUET में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे गए हैं। It has been seen that such theoretical questions are asked in DSC, in CUET exam. That is why you should be keeping them in mind also. Okay. So now price demand तो बहुत ही simple है बेटा। price demand क्या हो गई? वो demand जो price से affect होती है, right? So we know कि law of demand suggest करता है that there is an inverse relationship between quantity demanded and price. तो जब आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, राइट? सो लॉ ऑफ डिमांड ही है यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है। बट व्हाट कम्स इन एग्जाम इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। What comes in exam is assumptions of law of demand and exceptions of law of demand. तो पहले assumptions की बात कर लेते हैं। Assumptions of law of demand. First assumption of the law of demand, that there should be no change in taste एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे को डाइट कोक पसंद है और कल नॉर्मल कोक। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुड रिमेन द सेम। देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। द इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम। थर्ड, देयर शुड बी नो चेंज इन कस्टम। इसकी बात मैंने कल भी की थी। अगर आप कोई चीज कस्टमरी कर दोगे, अगर आप कस्टम में ले आओगे कि हर दिवाली पे यू शुड डू दिस, या हर ईद पे यू शुड डू दिस, हर क्रिसमस पे यू हैव टू डू दिस, इफ यू ब्रिंग समथिंग इन कस्टम, तो उसकी डिमांड कस्टम की वजह से है, लोगों की डिमांड एक्चुअली नहीं थी उस प्रोडक्ट के लिए। सो देयर शुड बी नो चेंज इन कस्टम, देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स like substitutes, complements. There should be no change in habits. Given all these things, sixth, quality also, no change in quality of product. Given all these things, we say that there is inverse relationship between the price and quantity demanded. So this is called the law of demand. The inverse relationship between price and quantity demanded, holding all of this constant, is called the law of demand. Okay? I hope this is making sense. We have to go ahead and talk about what are the assumptions of the law of demand. We have done that. अब आती है exceptions to the law of demand. ठीक है? So let's do those. Exceptions. But the first exception जो है वो है Giffen paradox. This Giffen paradox was given by Sir Robert Giffen. Giffen paradox हमें पता है Giffen goods के बारे में है. So Giffen paradox says that there may exist some goods where when the price increases, quantity demanded increases, and price decreases, quantity demanded decreases. So you can have an upward sloping demand curve. ये याद रखने की बात यहाँ पर, गिफन सबको पता है गिफन गुड्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर याद रखने लायक बात ये है कि हम लोग जब गिफन पैराडॉक्स की बात करते हैं, इट इज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेम दैट यू शुड बी नोइंग. ओके, नाउ you know, when we talk
about the exceptions of the law of demand. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, they can ask you what happens during war. So during war, there may be a case that even if price of goods are increasing, people may increase the demand of the good. ठीक है? या during the speculation time period. जैसे if price of something has decreased, if price of gold has decreased, I will think that the demand of gold should increase. But if people are speculating that this price can go further down, अगर लोगों को लगता है कि ये price और नीचे जाएगा, then they will not increase their demand currently, right? They will wait for the price to fall further. So during the speculation period also sometimes the law of demand does not hold. अच्छा, एक और चीज जो एग्जाम में बहुत ऑफन आती है इससे रिलेटेड, वो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है जो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, उसे बोलते हैं हम वीबलन इफेक्ट. दिस इज नोन एज द वीबलन इफेक्ट. ओके, सो व्हाट इज वीबलन इफेक्ट? सो वीबलन इफेक्ट बेसिकली is, and you know, let me just tell you something before we go ahead. Many students are confused, and we will try and see if we can make out the difference between the Veblen effect and the Snob appeal effect. Snob appeal effect. ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे कि Veblen effect क्या है, और फिर हम, या Veblen goods क्या है, और फिर हम बात करेंगे उनकी जो स्नॉब इफेक्ट की बात करते हैं, और हम देखेंगे कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है भी या नहीं है. So when we talk about the Veblen effect or the Veblen goods, these are those goods where the demand increases as price increases. तो मतलब बेटा हो तो ये upward sloping curve क्या, upward sloping demand curve है कि नहीं है? बट क्यों हो रहा है इसमें ऐसा? दिस इज ड्यू टू स्टेटस सिंबल. तो जो गिवन गुड्स थे उनका भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ही डिमांड कर्व था, बट वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही इंफीरियर काइंड ऑफ गुड्स थे, बहुत ही बुरे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि पोटैटो. बट जब पोटैटो का प्राइस बढ़ता है तो क्योंकि एक फैमिली और कोई प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाती, उसकी सारा पैसा पोटैटो में चला जाता है, इसलिए वो पोटैटो की डिमांड को बढ़ा देते हैं. दैट इज गिवन इफेक्ट. बट वीबलन इफेक्ट इज नॉट ड्यू टू दैट. वीबलन इज द स्टेटस सिंबल. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वुड हैव एवर गॉन टू these big exhibitions, the more expensive the painting, the more the demand for it. ज़्यादा rich लोग will be demanding it, right? So the more exclusive a good is, the more exclusive a good is, the more status symbol that good is. जैसे डायमंड या प्रीशियस स्टोन्स, जितनी ज्यादा उनकी प्राइसिंग होगी उतनी ज्यादा ही उनकी रिच में डिमांड होगी. So then that is a Veblen good, like diamond, right? अच्छा, many people ask, is iPhone a Veblen good or not? यार, iPhone could have been a Veblen good some time back, but now I think like every other individual carries it, right? And we also have, I mean, for me, we also have substitutes for it, like one what is this? OneNote, right? So so up to you. If you think that people will demand more iPhone if there is an increase in price of iPhone, then that ways it will remain a Veblen good, right? Now let's talk about the Snob effect. So the Snob effect in microeconomics is also very, very close to the Veblen effect, and actually many people use this as the same thing only. मतलब बहुत लोग उसको Veblen effect बोल देते हैं और बहुत लोग उसको Snob effect बोल देते हैं. So Snob effect is basically when you have a particular
डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ. You have high economic value but low practical value. ये डिफरेंस है बस. जैसे यहां पर वीबलन इफेक्ट में बहुत लोग लुई विटॉन, बहुत लोग आईफोन, बहुत लोग डायमंड लगा देते हैं. तो एटलीस्ट यहाँ पे इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी है, मैं डायमंड को यूज भी कर सकती हूँ ज्यादा, राइट. बट यहाँ पर ज्यादातर वो चीजें आती हैं जैसे रेयर आर्ट वर्क. इसकी practical value is literally nothing. I mean, people will appreciate artwork, I understand, but just to so these are the goods. Again, these are just status symbols for us, right? So whether it is Veblen effect or Snob effect, ये दोनों ही बातें एक status symbol के बारे में बात करती हैं, जिसमें ये है कि जितना ज्यादा उन चीजों का प्राइस होगा उतना ज्यादा हम उसको कंज्यूम करेंगे. The only thing that can differentiate between the two is that snob effect is dependent on the number of commodity demanded irrespective of price. Veblen effect is dependent on price. ये थोड़ा सा समझ लो एक बारी. Veblen effect अगर दोनों में suppose distinguish करना आ ही गया, suppose both of the options are given in a question, ठीक है, तो Veblen effect is dependent on price. मतलब जितनी महंगी एक चीज होगी, the more expensive a product is, the more the demand for it. But snob effect is not on price. प्राइस तो ठीक है, बट इट इज मोर ऑन हाउ मेनी पीपल आर डिमांडिंग इट. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगेगा कि यार ये एक पेंटिंग है जिसमें ऑक्शन में बैठे हुए 90 पीपल दे वांट द पेंटिंग, देन आई विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर इट. बट अगर मुझे लगता है कि ये एक पेंटिंग है जिसमें ऑक्शन में बैठे only one person is willing to pay the price for this painting, then I don't want to pay for it. Are you getting it? So the more I see that, okay, yaar, ye to it's very precious. More people want to pay for this painting. Even I will want to pay for it. Otherwise, I don't want to pay for it. So this is the snob effect. दोनों effect exam के लिए बहुत important है. एक है Veblen effect और एक है snob effect. एक आखिरी effect जो exam में आता है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है bandwagon effect. Okay. बेटा ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके CUET के लिए ही important है. These kind of questions will not come. हाँ, this will come again in UGC net. अगर if you're sitting as a professor later, तो ये सब vegan, Veblen effect, snob effect, bandwagon effect, ये सब आता है net में. But otherwise it will not. Okay. It will, मतलब don't come and ask me, ma'am, will it come in ISI? नहीं. This is not ISI level. Will it come in IGADR? No, it will not come in IGADR. Not in IIT, not in GATE. This is specific preparation for CUET exam. Okay. Okay. So bandwagon effect basically कहता है tendency for people to adopt certain behavior, style, attitude, simply because other people are doing it. तो just because बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे for example, I hate iPhone, but just because other people are buying it, if I start buying iPhone, that is bandwagon effect. So you know, you're here. Just this is, imagine you're here. This is what you think. This is what everyone else thinks. If you start moving in this direction, that is bandwagon effect.
So what you do is dependent on what others are doing. That's the bandwagon effect. Is this clear? These three effects, beta, are very, very, very important from exam point of view for your CUET exam, and you're supposed to read them before you go for your exam. ठीक है? अच्छा, ये इसके अलावा जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ये हो जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व. बट जब भी इनमें से जो हमने assumptions में लिखा था, whenever any of these factors will change, this is called shift of the curve. ठीक है, तो हम आज शिफ्ट ऑफ द कर्व पे ही रुकते हैं. अगर इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिमांड ऑफ कॉफी बना रही हूँ, कॉफी, ठीक है, ये प्राइस हो गया, डिमांड हो गई, ये कॉफी की मार्केट है, और प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गया, तो डिमांड ऑफ कॉफी विल शिफ्ट टू द राइट. अगर सब्स्टिट्यूट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी के साथ मेरे को मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री लगता है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे टेस्ट चेंज होंगे तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. ऐसे ही अगर आप कोई चीज कस्टम में कर दोगे कि करना ही करना है, जैसे इफ इट बिकम्स कस्टमरी दैट every person on Sunday has to wear a particular color of cloth, तो उस color of cloth की डिमांड बढ़ जाएगी, so the demand curve will shift to the right. ठीक है, ऐसे ही अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होगी तो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. सो assumptions में हमने जो भी लिखा है, होल्डिंग दोस कांस्टेंट, देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, और अगर यही फैक्टर्स चेंज होंगे देन देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ द कर्व. ओके,